good film with good intentions, honest filmmaker would be let down. Absolutely. And this is the lesson, master class lesson, कि अच्छी फिल्म बनाओगे तो अगर वॉर भी हो जाए तो लोगों को वो पसंद आएगी. That's what I've learned from him. As long as you make a good film with good intentions. And just an aside question I want to ask you, Yash ji, because हम वक्त की बात कर चुके हैं जो I think उस वक्त की और आज वक्त की भी सबसे बड़ी फिल्मों में से रही है. धूल का फूल, धर्मपुत्र, and then suddenly ये सब तामझाम इतना बड़ा सब करने के बाद बीच में आपने एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें ना कोई गाना था, ना कुछ बजाना था, ना कुछ, एकदम थ्रिलर सी थी, कुछ फिल्म नोयर, डार्क, इंटेंस फिल्म. और जैसे फर्स्ट टाइम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हीरोइन जो थी वो नेगेटिव थी उसके अंदर, नंदा जी, am I right? And the film was called Ittifaq. How did that come about? When we were making Admi और इंसान, जब हमने ऑलमोस्ट फाइनल प्रिंट देखा, नॉट री रिकॉर्डेड, हमको लगा कुछ गड़बड़ी है फिल्म में. इस फिल्म में कुछ 10-15 दिन शूटिंग करनी चाहिए, ऐसे तो रिलीज नहीं करनी चाहिए. लेकिन जब हम तहकीकात किया, सायरा बानू जी was not well. She had gone to London for a treatment. And she won't be back at least for 3-4 months. अब क्या है, वो पिक्चर बन गई है, कोई दूसरी पिक्चर शुरू करके तो रिलीज नहीं कर सकते. मैं बड़े भाई साहब एक पिक्चर वो बनाते थे, एक मैं बनाता हूँ. अब तो वो तब शुरू करेंगे जब मैं रिलीज करूँगा. बड़ी दुविधा में थे. उसी दुविधा में एक दिन हम सब एक प्ले देखने गए, गुजराती प्ले धूमस, which was adopted from an English play, A Signpost to Murder, which was adopted from a French play. जैसे मैंने कहा वक्त बदला नहीं. तो हमें बहुत अच्छा लगा प्ले. हमने नेक्स्ट डे राइटर्स को साथ लेके दिखाया, इसको बनाते हैं. मुझे याद है प्रवीण जोशी उनके डायरेक्टर थे, एक अरविंद जोशी का हीरो था, और सरिता जोशी जो आज भी हैं सीरियल में कमल की हीरोइन थी. उस वक्त राजेश खन्ना जी नए नए आए थे फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में. तो जो उस कॉन्टेस्ट के 5-6 आदमी थे, उनको एक एक पिक्चर देनी थी उसको. तो लाजमी था. राजेश खन्ना तो है भाई, अब ऐसी हीरोइन ली जाए जिसके पास कोई डाउट ना हो कि मर्डरस हो सकती है. तो हम पहले राखी को लेना चाहते थे, नई पिक्चर थी वो, लेकिन वो पिक्चर काम कर रही थी जीवन मृत्यु में राजश्री की. शी कुडंट वर्क, शी वाज साइंड फॉर देम. वी टुक नंदा. कोई आउट ऑफ डाउट नहीं आ सकता कि ये काम कर सकती है. वी मेड द पिक्चर इन एग्जैक्टली 20 days स्टार्ट टू फिनिश. No song, there's a thing, sir. And we were not expecting very big thing. That is the first picture we released without interval. Oh. Then what did you do before interval? So we bought a documentary for about 20 minutes, story of a doctor. We showed that, and then start to finish, we showed the picture. The first picture in India with no interval was shown, and it became a very, very big hit. Absolutely. इतना अजीब लगता है. हम सोचते हैं कि जब आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं या पहले के भी बड़ा सोचते होंगे एंड प्लान करते होंगे अगली कहानी क्या होगी. बट यू नो ड्यूरिंग हिज टाइम एंड आई थिंक इवन टुडे इट्स नीड बेस्ड. जो जीनियस होता है वो प्रोलिफिक होता है, वो रुकता नहीं है. जो उसको अच्छा लगता है, दिल में आता है, जो बनाना चाहता है, जब बनाना चाहता है, 22 दिन में, 28 दिन में, बिना गानों के और एक डॉक्यूमेंट्री आगे लगाकर. जीनियस इज true genius is like that, like SG is not like, you know, बैठे में और सोच रहे हैं और हम ये करेंगे. So this story I wanted everyone to know because when I saw Ittifaq, even today if you see Ittifaq, it seems like one of the most modern films ever made in India, and it was made just out of, you know, 2-2.5 महीने में ऐसे बैठे हुए हैं तो हम पिक्चर बनाएंगे. और मैं आपको एक किस्सा और बताना चाहूँगा यश जी, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, कि आपको पता नहीं है कितनी सारी जिंदगियाँ हैं जो आप छूते हैं अपने फिल्मों के थ्रू. Of course you know people like your films, but there's so many lives which have been touched we don't even know that they exist. One of them is mine. मैं 9 साल का था शायद, और मैंने सिनेमा थिएटर में कभी थिएटर के अंदर पिक्चर नहीं देखी थी. हम इतना पैसा नहीं था, जैसे आपने बताया थिएटर में बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था, और मैं हिंदी में फेल होता था. और ये बात मुझे अभी 2 साल पहले मालूम पड़ी बिकॉज विद माई लैक ऑफ नॉलेज आई डिडंट इवन नो दैट यश जी हैड मेड दैट फिल्म. तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तुम हिंदी के अंदर 10/10 लेकर आओ तो मैं तुम्हें थिएटर हॉल में ले जाके, मूवी हॉल में ले जाके पिक्चर दिखाऊंगी. वो एक सबसे बड़ा ड्रीम था हम सबका. और विवेक सिनेमा हॉल था पटेल नगर में, मुझे भी याद है.
और मैं 10 में से 10 लाया, हालांकि झूठ नहीं बोलूंगा, एक आंसर मैंने कॉपी किया था। एक 9 on 10, बट दिस फ्रेंड ऑफ माइन धीरज उपाध्याय हिंदी में बड़े अच्छे थे, तो मैंने ऐसा कॉपी कर लिया था वहां से, और मुझे 10 में से 10 मिले। और पहली फिल्म जो मैंने लाइफ में देखी थिएटर के अंदर जाकर, और मेरे दिल में कहीं पर ऐसा एहसास हुआ, 9-10 साल का था, कि यार ये चीज बहुत अच्छी है जो हो रही है, ऐसा कुछ मैं भी कर लूं लाइफ में। मैंने कभी किसी को ये बात बताई नहीं। द फिल्म वाज जोशीला। अच्छा। हाँ, आपकी जोशीला फिल्म इज द फर्स्ट फिल्म दैट आई सॉ ऑफ योर्स। और इस अगले 5-7 सवालों के बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि आपकी दुम के पीछे मैं कैसा लगा हुआ हूं, कि मेरी लाइफ आपकी लाइफ से कैसी जुड़ी हुई है। बट राइट नाउ आई शिफ्ट टू 1971, द बिग डिसीजन दैट यू टुक, बिकॉज आप अपने भाई साहब के साथ काम करते थे, बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बनाया। बट इन 1971 यू डिसाइडेड कि आप थोड़ा सा उनकी प्रोडक्शन से हटकर अपना खुद का बैनर शुरू करेंगे, जो बैनर आज भी है, YRF, यशराज फिल्म्स। सो हाउ डिड यू टेक दिस डिसीजन? वाज इट डिफिकल्ट, इमोशनल, टफ? वाज इट नीड बेस्ड? Or did you think, it's time I started doing what I should do on my own and not be dependent on anyone else? It's a very important, touchy question. This phase is most important in my life. As I say, Mr. Yash Chopra, my father, my friend, my guru, my guardian, my guide, everything. Today I'm sitting here is only because of him, nobody else. But at that time, and when Ittafaq or Aadmi Insan, Ittafaq did well. Aadmi Insan, in spite of our reshooting, Allah didn't do well. But in the meantime, I got married. When I got married, To Paramount, right? I think so. I don't remember now. Just checking. I thought to myself at that time that, let me see. Before that, I'm a Fakir Basha. I don't know if I got money or not. I don't care about money. What do you spend? What's my bank? I tell you honestly, till then, I didn't know even how much money is like in the bank. I didn't want to care. I suddenly thought there's some responsibilities come. I'm on a salary. And creatively, I thought I should fly on my own wings. But it was very, very important decision for me. And there was nobody elder to me in Bombay except myself who could I discuss. This move can make me, finish me or take me other sides. That time I came to know from my wife or said that she is pregnant. I thought I won't be able to fight this battle with Pam in Bombay and pregnant and all that. I searched all over my resources. I thought I don't have so much money. A couple of thousands. In those days, there were no so many airlines, only one Indian Airlines. I spent the whole day at the airport in order to get her own seat. I told her, you go to Delhi, do the delivery. I'll fight my battle. Of course, I've taken her into confidence. I'm doing this thing. When I dispatched her, 2 days I thought to myself, Mr. Yash Chopra, are you doing the right thing? You are living in an ivory tower. PR films. You want to branch out your own. What will you do if something goes wrong? But I didn't know, somewhere my inner self saying, either now or never, you have to do it. I remember when one Sunday I rang up myself with great guts to myself, I want to meet you, but I want to meet you in the office. I didn't have a flat, I didn't have a car, I didn't have a bank balance. I had a story of a Krishnan called Dao, which on my honeymoon, I just remember, I'd seen a lot of English films and all that. One night I was having dinner in a pizza restaurant. Having pizza, I modified the story according to my desire because I thought it should be very, very romantic and should be very, very bold.
Bold means It was very bold. I went to him. I said, myself, I have a feeling that I should make my own films called Yash films. To make the people feel is one, you direct a film of my company, I direct one film of yours, but I want to establish Yash films. He said, why you get out-focused? Why should I direct your film? Why should you direct my film if you want to make Yash film? Be focused on Yash film. Do your films. But one thing is, now you are on your own. That was a pointer to me. You have to talk to the artist yourself. You are producing this film. What will you pay them? What will be the other things? You have to talk to all the technicians, all the writers yourself. And you have to organize money yourself. I know. If I have to make a film, I have to do all the things on my own. He came out of the office. He said, how you come? I said, I've come in a taxi. He said, but I can drop you. Where should I drop you? I thought if I tell him, I used to link Lippins Road, embassy apartment, which belonged to him. If I told him, I'm the embassy apartment, it will be too much. He was driving the car. He had no driver Sunday. I told him, I got some work in Sun and Sand. You drop me there. Because Sun and Sand was next door to his house. He dropped me there. Then I met Mr. Uday Sharma, who was the manager of the Sun and Sand. Till today is most closest to me. I said, Udesh, leave the office, let's go home. He had a small little Fiat. And in the car I told him, I've left BR Films. Today I'm on my own. He was very happy. He said, you've done best thing. In life, if you have to grow, you have to grow on your own feet, not anybody's shoulders. But the final stroke, which made me strongest, my mother was staying with me in those days. I came home. I told Mataji, I left myself. I am making my own company. She doesn't know what is production versus direction. She didn't know it. She was an illiterate lady. He said, बेटे, जो तेरा दिल करता है वो करो. मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है. मैं तुम्हारी आंखों में दिख रही हूँ कि तुम्हारे में वो कॉन्फिडेंस है. You will do it. Of course, वो हिंदी में बोली, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूँ. मुझे लगा अगर मेरी माँ का आशीर्वाद है, मुझे 20 साल तो हो गए बॉम्बे में आए उस आशीर्वाद पे, इस आशीर्वाद पे 20 साल तो और रह जाऊंगा. Still things followed. Mr. Gulshan came, punished me. I had no money. He told me, you should direct a film of mine. I said, Gulshan, it's not. I will direct a film of yours next. I have told somebody, given a challenge, that I will direct my film in Yash Raj Films, Dog. First I'll do that. But then I'll do yours. But you saw, Joshila was that first film of outside my film. That's the time I went to every star. At that time I feel that people blame stars so much. No. I went to all the three of them, Shamya Thakur, Raki, Rajesh Khanna. I am making film myself. Are you with me? I don't want any discount from you. I'm a producer, I'm a businessman. But all the three of them, with one voice met, alag-alag. जो तुम्हारी प्राइस है, जो तुम्हारा बजट है, वो हमारी प्राइस है. बाकी कभी-कभी सोचता हूँ कि लोग ऐसे भी होते हैं. Raki heard it, brought some money to make it. You keep it. Making film. मैं कह रहा I'm doing business. पैसे मेरे पास नहीं. तुम मुझे दे देना जब. अभी तो यूज करो. किसी ने कुछ नेगेटिव काम नहीं किया. It's marvelous that you had so much support to take this big decision. Big decision of my life. I formed my own team of cameramen, sound, everything my own. And there, this biggest help came from
Most a strange quarter. Anna Saab, Mr. V. Shantaram. Vishantaram ji. Rajkamal has never given any office to anybody. He came to know that Yash is becoming a producer. He needs some office. He's, you can say, all alone. He called me. My Rajkamal studio for you. You take the office, work from here. And in those days, there was some sort of ban on the artists. They can't work more than 3 films or 6 films. Don't bother about any man. As long as Rajkamal is working, nobody can dare to come here. So I can't forget, even till today I can't forget Anna Zafar. But the thing is, this went on. Yeah. Picture was ready. People saw the picture. All distributors came from all quarters. Next day I went to Kuchini's office and all the distributors were praising high. Wonderful film, what the direction you've done, what you. But I saw कि उनकी आंखों में कुछ बट है. वे तुम बोल रहे तारीफ कर रहे मेरी, अरे भाई पिक्चर की बात करो, मैं प्रोड्यूसर हूँ भी. यार जी बुरा मत मानना, अगर ये पिक्चर इतनी ना चले. मैंने सोचा यार तो पर हम आप बकर मत करिए, बहुत अच्छी डायरेक्शन है और हम लूज नहीं करेंगे. बहुत सस्ती पिक्चर बनाई आपने, पैसे कोई लूज नहीं करेंगे. उन दिनों में पिक्चर एनजीएस पे बिका करती थी. मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत होगा, नहीं चली पिक्चर. इट्स माई लिटमस टेस्ट. लोग बोलेंगे इसको तो आते क्यों नहीं. एवरीथिंग मस्ट बी याश चोपड़ा. But I couldn't do anything. The distributors on the release first week, they only booked 9 theatres. It was very, very small. It was small, 9 theatres was and small. because before that, a lot of films of Rajesh Khanna had not done well. So they had a lot of confidence in him also. So I was the first victim. But when on Monday announcement opened, it was so fabulous. They had to increase to 18 by Thursday. Here I come, and God is with you. Your honesty is your work. Confidence is your work. I never planned I'm making a bold film. No. I just planned this film, this story excites me. I'm a simple human being. If it excites me, if I make well, it will excite everybody. And that was history. It's the biggest at that time. And from that day, Yash Chopra films has come up till today. Sure. And I'd like to quickly move on to the next ones actually, जो हम लोगों ने जो ज़्यादा देखिए दाग of course उसके बारे में फिर से मैं बात करूँगा. The unconventionality of your subjects. You're a simple man, but you choose very very unsimple topics to make. तो इसमें कुछ ना कुछ कहीं पर दाल में कुछ काला है. We have to find out. But quickly moving on, आपने 2 फिल्में साथ में की उस जमाने में, 2 बिल्कुल अलग किस्म की फिल्में जो आज तक क्लासिक हैं. तब क्लासिक थी, जिंदगी भर क्लासिक सी रहेंगी. And completely chalk and cheese kind of films. Yash ji made 2 films near simultaneously. उस जमाने में पहले तो इतनी बड़ी फिल्म बनाना और फिर 2 वैसी एक साथ बनाना बहुत ही बड़ी बात थी. Yash ji made दीवार and कभी कभी together and with the great Mr. अमिताभ बच्चन, जो एक में पोएट थे और एक में थोड़े से एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर था. And both of them classic films, both of them. तो कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि पोएम की जगह वो कहते थे मेरे पास माँ है और राखी जी को कहते कभी कभी मुझे मेरी माँ याद आती है. There was 2 reasons. When Diwar script came to me, this full bound script, I heard the narration of Diwar from Javed. I think till today, Diwar is the most finest script written by Salim Javed. Most finest script. There's no flaw in the whole. There are a lot of other castings came into people's mind, but we thought Amitabh and Shashi Kapoor are the best for that. Because the producers were 2 different producers. One was produced by Gulshan Rai, the Kabhi Kabhi was produced by me. So some facility comes to you, he will look after the production of that picture, I look after my picture. Secondly, these 2 people
are the most punctual people I've ever worked with. Don't look at me like that. There's no special shoe. Amitabh Bachchan and Yash Chopra, the most punctual. I could depend on them. Whenever I want, they are there. But in these two films, I, being an honest man, an honest filmmaker, I gave the option of releasing first Diwar in 75. He should be given preference. He's putting money for both the films, of course. But when you talk of Kabhi Kabhi, I think that's the most enjoyable film I've ever made in my life. I've pictured in all the 3 seasons of Kashmir, autumn, summer, and snow. It was, somebody used to say when it was not shooting going on. It was honeymoon camp. It was picnic. Rakhi was just married. Vaidharma was married. गलत समझेंगे उसको. यदि कि those things आज नहीं होंगे कभी. Jaya was my assistant, proper assistant in Kashmir. Amitabh's parents, they were actors in my film as कन्यादान करते थे राखी के parents. कुछ पार्टी के सीन थे, अमिताभ को भाई और भाभी है वहां पे. शूटिंग हो रही तो किसी के कुछ ज्वेलरी आ रही, किसी की राखी को घाघरा किसी का आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है. ऐसा लगता है फिल्म नहीं बना रहे, पिकनिक बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं. हम कभी शूटिंग करने चले गए पहलगाम में, शूटिंग की चिंटू नीतू की. कितने हम भी साथ चलेंगे भाई, तुम लोग शूटिंग करो, हम ऐश करेंगे, खाएंगे, मरेंगे, अंताक्षरी खेलेंगे. आज तक आई थिंक कभी कभी से ज्यादा एंजॉयमेंट कभी नहीं हुआ. बिकॉज आई टोल्ड यू इट वाज वंडरफुल फिल्म मेकिंग दैट टाइम. उसकी स्टोरी मेरी वाइफ पैम ने लिखी थी. उसने कहां से ली मुझे पता नहीं, बट स्टोरी उसकी थी. शी गॉट द क्रेडिट फॉर इट. तो उस as you say, mentally it was not strain, it was challenge. 2 अलग films simultaneously shooting, it was challenge. I should be mentally stable, make films. I should be honest about them. And by the grace of God, both did very well. And yes, he's done that more often than once actually. He went on to do even Trishul and Kala Patthar. And Kala Patthar भी उसके बाद आपने same years में simultaneous shooting. And completely. वो भी एक गुलशन जी की मेरी थी. Yeah, so it's amazing the amount of work he's been able to put in with such big films. आज हम एक बनाते बनाते 3 बेंगे हो जाते हैं. और मेरी दूसरी कहानी जो आपसे जुड़ी हुई है, 80s की बात बता रहा हूँ मैं, तब शायद 14 या 15 साल का था मैं. और मैं एक शूटिंग हो रही थी आपकी फिल्म की सिलसिला, तो मैं वो शूटिंग देखने के लिए अपने घर वालों के साथ वहाँ पर पहुँच गया था. और मेरी कहानी ये है कि मुझे आज तक ये नहीं मालूम था कि मेरे बीवी के, होने वाली बीवी के जो घर वाले हैं वो भी वहाँ पर थे. अच्छा. तो जैसा आपकी फिल्मों में होता है ना, ऐसा गाना वाना चल रहा है, हाथों में 9 चूड़ियाँ और लड़का लड़की एक दूसरे को देखते हैं. तो उस मैंने उम्र में देखा नहीं था गौरी को या उनको, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हमारी सारी फैमिलीज वहीं पर थीं उस शूटिंग में. और उनकी जो मदर हैं वो बार बार मुझे बताती हैं कि वो खड़ी हुई थी एक कोने में और आपने लाके उनको कुर्सी पर ऑफर भी की. तो मेरा सिलसिला जो है आपके साथ चिपकने का काफ़ी मतलब चलता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था. एंड एक बात मैं पैमांटी आपको बता दूं, इस बातों में आपने नोट किया है कि जितनी भी हीरोइंस हैं वो यश जी को बहुत चीज़ें ऑफर करती हैं. राखी जी ने पैसे भी ऑफर कर दी है, पोएट्री भी हो रही है. सो आई यू जस्ट कीप, ये मैंने इसलिए ही किया ये प्रोग्राम, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाया था. Okay, and because we are talking Silsila, we move on to 1981. Am I right? That's the year? Yeah, 81. और 1981 सिलसिला जो again very bold subject, very different, but आज तक लोग ये समझना चाहते हैं और with all amount of dignity and goodness and honesty that perhaps it was one of the most interesting, one of the biggest, one of the most challenging casts in a film ever done in the history of Indian cinema. So वो कैसे हुई? यही original cast थी या पहले कुछ और था फिर आपने बदला? But Silsila 1981, the only thing I'll talk to you about is the casting of that film. There was not original casting. This original casting was in my mind. I wanted this casting. You wanted the casting? I wanted, लेकिन ये थी नहीं. But I knew it won't happen. Original casting जब अपने फाइनल की थी, शायद परवीन बाबी, अस्मिता पाटिल थे. Okay. And who was playing who? Smita ji was playing? Jaya, Parveen Babi was playing Rekha. Okay. Before
Going for a shooting, I had gone to Kashmir. Bachchan Saab was shooting for a film, Kalia. And we were shooting another film, not directed by me, Sawal, Sanjeev Ji, so all the other director and all that. After dinner, Bachchan Saab used to work, Amitabh. He used to have full script with him. And he studies. He goes each and every comma full stop. After everybody gone out of the room, he comes to me. Are you sure with the casting of the film? You're happy? I'm not happy. You tell me honestly, कि आपको लगता है कौन की आइडियल कास्टिंग क्या है इस सिलसिले में कि बताने का फायदा कुछ है क्या? अब तो शूटिंग करने हैं भाई हम लोग। कहते फिर भी बताओ मुझे, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, बहुत कमाल स्क्रिप्ट है, फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में पिक्चर बन रही है यार। मैं कहता हूँ सच पूछो तो अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, रेखा, ये कास्टिंग है। अब बोलो तुम। अमिताभ बच्चन साहब बात करते कुछ दिल सोचती है तो बहुत एक लंबा चौड़ा पौधा था।